So guys, especially for the viewers who are watching it at around this time, when exam season is just right around the corner, there are a lot of tests which all of you guys have said is extremely important at the last few months, right? So let's just go more deep into it and let us discuss that how do you recommend the students should give this test, how many tests per week or per month, and more importantly, how do you analyze this test, right? So just would love to understand how did you used to do, and Anand then would love to also understand from you that what would be your common recommendation for the aspirants now, right? So Ocean would love to start with you. Yeah, over the course of plus 1 and plus 2 we had fortnightly tests which covered the topics which were taught to us in the last week or so. And as the syllabus was completed in the month of October, plus 2, we had part test to begin with for revision of plus 1 and then plus 2. And within around 2 months to 2.5 months, then we started having full tests, full syllabus tests. Okay. So actually the part test helped a lot in revising, directed, focused revision. और बाद में full test हुआ तो उसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि full test ही आएगा और तो tests are actually important और बाद में frequency भी बढ़ जाती है once weekly फिर twice weekly तो tests का काफ़ी important role है और इंटरेस्टिंग। तो लिसा, आप कितने टेस्ट देते थे लास्ट के, स्पेशली लास्ट के 2-3 महीने? उससे बोर्ड्स के बाद तो हमारे लाइक रेगुलर टेस्ट होते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे एक टेस्ट होता था। तो एवरी डे उससे पहले लाइक 2 to 3 डेज के बाद एक टेस्ट, और उससे पहले एवरी वीक होता था। तो मतलब उसके बोर्ड से पहले ऐसा था कि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर अप हो चुका था टेस्ट में, एंड बोर्ड्स के बाद वी स्टार्टेड गिविंग फर्स्टली वी गेव टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, बट आफ्टर दैट इट वाज लाइक फुल सिलेबस टेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू टॉपिक, एज यू सेड दैट पूरा टॉपिक कवर हो जाता है एंड यू गेट टू नो कि आपका उस टॉपिक में क्या वीक पॉइंट रहा, तो यू कैन रिवाइज दैट। और फुल सिलेबस टेस्ट में यू गेट टू नो हाउ टू मैनेज द टाइम एंड हाउ टू हैव गुड एक्यूरेसी। लाइक हर टेस्ट जब आप देते हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं अगर आप उसको जाके एनालाइज नहीं करते टेस्ट को। लाइक अगर आपने टेस्ट दिया तो गो होम एंड एनालाइज व्हाट यू डिड रॉन्ग, और जो भी सिली मिस्टेक थी उसको एनालाइज करो, बिकॉज सिली मिस्टेक्स फाइनली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो बहुत डिप कर देती हैं आपके मार्क्स में। सो सिली मिस्टेक्स को एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली क्या करती थी, लाइक टेस्ट सॉल्व किया, उसके बाद जाके हर क्वेश्चन को एनालाइज किया कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, थोड़ा ऐसे ही कर दिया था या फिर कॉन्सेप्चुअली किया था या कैसे किया था, क्यों गलत किया, कौन सी सीधी मिस्टेक हुई। तो आई यूज टू राइट द मिस्टेक्स एंड ऑल्सो नेक्स्ट टेस्ट दिया तो उस टाइम वो थोड़ा रीड करके गए कि कोई मिस्टेक इस टाइम वो रिपीट नहीं करनी है। तो इसके साथ काफ़ी मिस्टेक्स एलिमिनेट हो गई थी। अमेजिंग। ये जो आपने बताया है दैट इज लाइक सो अमेजिंग, बिकॉज बच्चे टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करते हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वेरी इंटरेस्टिंग। टॉकिंग अबाउट टेस्ट, लेट्स ऑल्सो डिस्कस द एग्जाम डे, राइट? बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, राइट? एंड तो definitely you all would remember that day very clearly. So would love also you to share कि उस दिन क्या हुआ था, right? And anything you would like to advise the students watching this कि what are the strict to do's and not to do's, right? जो कि you would share with your experience. Especially the last week I would say before the test, before the final day, you have to just chill out and just full test को solve कर लिया 2-3 और उनको देख लिया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और लास्ट डे में you don't have to think about कि कितने सीट्स हैं, how many students you are competing with. It's all about a mind game. So the fight is within you. So that's important. So chill out and just have confidence. Chill out बोलना तो बहुत आसान है, but we all know कि actually it's very tough, right? तो उस दिन कुछ ना कुछ ड्रामा तो होता ही होता है। तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो share to all those guys watching कि क्या हुआ था, कुछ special anything you remember from that day?
in the NEET which I gave, I actually didn't sleep the whole night. Oh my god. So it was it was a significant turn, but I my parents were with me and they supported and drank milk and and prepared myself the next day, and it fortunately went well. But for the subsequent exams, the AIMS and other exams, I learned from that episode that I need to stay calm and importantly have confidence in my preparation. For the last 2 years we have been preparing, so that's important. That's important. So Lisa, what happened with you? Like मेरा like NEET में when I gave the exam, I was expecting from a lot from myself, so it was like बहुत मतलब इसके कारण I was very much tense, so I gave this thing way back in AIMS से like एक दिन पहले it was like too hot and मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, so it was getting more and more tense, so I went to my relatives home, my parents came and then they like chilled out me. So उसके बाद like AIMS में उससे पहले I thought like कि 2 साल पढ़ा है तो like I have to enjoy these 3.5 hours. So AIMS में literally ऐसा था कि मुझे ये 3.5 घंटे enjoy करने हैं, जो करना है इन्हीं में ही करना है. 2 साल पढ़ा है तो अब तो क्या ही हो जाएगा, तो जो करना है तो अच्छे से ही करना है. तो मतलब AIMS में ऐसा माइंड सेटअप हो गया था NEET के बाद. तो देखिए इतने छोटे से माइंडसेट चेंज से कितना बड़ा डिफरेंस आया. NEET में योर रैंक वाज 196. So all the students watching this, very important point. NEET में Eliza from 196 in just 2 months got to all India rank 1 in AIMS. And I think from her talk, it was just that simple change in attitude probably. कि NEET में शायद आप वो tense थी, right? तो जो आप deserve करती थी, obviously AIMS में अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हो तो 196 नीट में तो बिल्कुल नहीं डिजर्व करती थी. तो डेफिनेटली दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्ली दैट एंजाइटी एंड ऑल दैट, राइट? एंड दीस आर द थिंग्स व्हिच सच स्मॉल थिंग्स हैव सच अ immense impact, right? So Anand, I think you have seen lot of more other students also, right, going through these ups and downs. So what would you suggest, some to do's and not to do's to the students? So both for parents as well as students. पेरेंट्स के लिए सबसे पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम को हम ओकेजन की तरह देखते हैं एंड वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट एंड गिविंग इट सो वेरी, वी पुट इट एक्चुअली एट अ डिफरेंट लेवल एंड वी गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट. जंग की तरह. तो आपको टीका लगेगा, आपको दही और चीनी खिलाई जाएगी या कोई मीठा खिलाया जाएगा सो दैट यू गो एंड गिव बेटर. बट actually it is putting pressure on the kid at the same time, because वो अंदर कहीं से पहले से ही वो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है और वो रियलाइज करवा देते हैं the entire society. तो I remember my times and I've seen lot of students face that सुबह कॉल आने शुरू हो जाते हैं रिलेटिव्स के जो आप जानते भी नहीं हो, all the best and suddenly you feel कि यार कुछ तो अलग होने वाला है. So just treat that day as just another day. It is just like another test that you are giving in your coaching institute or anywhere you are preparing from, and you should not treat it like a occasion. So first thing is this for both parents as well as kids. और kids के लिए है कि over expect मत करो, because they have put it very lightly, but it is so very important point कि 2 साल की मेहनत आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता है. और ऐसा सबके साथ हुआ है. यू मस्ट रिमेंबर योर डेज एंड आई रिमेंबर माई डेज कि मुझे अपने समय एग्जाम वाले दिन लगता था मैं सारे फॉर्मूले भूल रहा हूँ, जबकि आज भी मुझे बहुत सारे फॉर्मूले जो उस समय किए थे वो आज तक याद है. सो यू डोंट एक्चुअली फॉरगेट दैट, बट बिकॉज यू आर इंटिमिडेटेड बाय दैट एग्जाम, you tend to, that fear tends you to actually that reminds you that you have forgotten a lot of things, and therefore अगर आप उस एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो और आप मानते हो कि वो जस्ट अनदर डे है, तो आई थिंक वो फियर निकल जाता है. और वो फियर निकल गया तो फिर तो लाइफ इज चिल, देन यू डू बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योरसेल्फ. So all the guys watching this, especially the ones who are going to give this exam just in few months, chill मारना बहुत जरूरी है, right? So don't take undue stress. You have prepared enough for this exam and trust yourself.